Okay, so let's get started. So, welcome all in our weekly webinar, Market Masterclass with Religare. In this webinar, we talk about the market performance during the week, a quick snapshot of the key indices, benchmark indices, sectoral indices, Nifty 50 gainers, losers. Then we share the possible outlook for Nifty and banking index in the following slide. And we end the session with a few stocks also, which should be on your radar for the short-term trades. At the end, we conduct a quick feedback poll for the session. And then if there's any questions related to the webinar, any particular sector that you wish to know more and any theme that you would like to explore, obviously we can do that during the Q&A session. तो आप सभी का स्वागत है हमारे वीकली वेबिनार में। और इस वेबिनार में जैसे कि इसका स्ट्रक्चर जो है कि हम बात करते हैं पहले परफॉर्मेंस कैसी रही इस हफ्ते और क्या नेक्स्ट वीक के लिए आपको प्लान करना है, निफ्टी और बैंकिंग इंडेक्स में कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे होनी चाहिए, ये सब कुछ चीजें हम बात करेंगे। We'll start with a disclaimer first that it's not a trading or investment recommendation. तो बेसिकली ये जो वेबिनार हम कर रहे हैं ये इनपुट शेयर कर रहे हैं बेस्ड ऑन आवर मार्केट रीडिंग्स, बट ये कोई भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। सो बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन शेयर्ड, प्लीज चेक विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। So this is the snapshot for the week. So as you can see that both Nifty and Sensex could manage to end in green, marginally higher, second week after the union budget week. A volatile week, but we eventually managed to close in green. When it comes to the sectoral moves, metal, pharma, IT, financial, banking, they did well. At the losing side, we have FMCG, realty, and energy. Talking about gainers, the top two names from the banking financial basket, IndusInd Bank, Bajaj Finance, Shriram Finance, and then we have Adani Ports and JSW Steel also. On the losing side, Trent, ITC, Britannia, HUL, Tata Consumer. So you'll see 4 names out of 5 on the losing side from the FMCG pack. And that is the reason why we are seeing a 6% kind of a cut in the FMCG index as well. तो देखिए ये पूरे वीक का लेखा जोखा कि किस तरीके से मार्केट की परफॉर्मेंस रही। इसमें केवल मिड कैप और स्मॉल कैप का नहीं है, तो उनका भी लार्जली सिनेरियो मिक्स्ड ही रहा। बेंचमार्क इंडाइसेस की बात करें, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही करीब करीब आधे % के गेन के साथ। ज्यादातर पार्टिसिपेशन अगर सेक्टोरल फ्रंट पे बात करें तो पॉजिटिव साइड पे रहा, जहां पे मेटल ने लीड किया। वहीं पे जो एफएमसीजी है वहां पे शार्प कट्स देखने को मिले। गेनर्स लूजर्स जो है लेफ्ट हैंड साइड पे आपके गेनर्स की लिस्ट है, जहां पे इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस। तो एनबीएफसी बास्केट, फाइनेंस बास्केट, रेट सेंसिटिव बेसिकली ये आपका अच्छा परफॉर्म किए। वहीं पे एफएमसीजी पैक के जो बड़े नाम हैं, आईटीसी, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर्स, एचयूएल, इन सभी में 4 से लेकर 7% तक के कट्स रहे। और ये टॉप 5 लूजर्स में जहां पे ट्रेंट ने लीड किया लूजिंग साइड पे, ये नाम आते हैं। नाउ let's talk about what next. So this is the daily graph of Nifty index, and those who joined us in the last webinar, they might recall that we've discussed about this trend line hurdle and a possible retest. So eventually, yes, we did. That means we not only reclaimed short-term average, long-term average, but we also tested this trend line hurdle at 23,800 mark. But afterward, we are seeing this dip in the last 3 trading session. So how one should position, especially in a market like this, wherein
uh, we are seeing profit taking after every uptick. Means it's not a clear cut, directional pay so far. Means last time we have discussed this, that we come to know whether it's a reversal or a rebound. There's a difference between the two. Means when it comes to reversal, it means the trend has reversed. Now we are inching higher. But for that, we need to have some base in place, right? We need to have higher lows in place and a decisive breakout too. So that's not the case so far. So we are just in a process to do that. So it's a rebound so far in the market. So for next week, this yellow line, 23,400, that's the immediate support. And it's also a critical support. But if you see this recent low post this, election day move, this could be the first area of support, because we are talking about from the entire week perspective. We are not talking about on Monday. What could be the possibility on Monday? On Monday, I am expecting that 23,400 will be the critical area to watch out for. But from the entire week perspective, 23,200 would be critical, because this was the recent low that market made, and then we saw a rebound. So this 200 points zone, 23,200 to 400, will be the first area of defense. If it fails to hold, then probably we can retest this previous swing low around 22,800. So as of now, bias is still in the favor of bulls. Upside, first, obviously, this trend line resistance, right? But, we usually see a resistance to a trend line on a first attempt, largely, in the most of the cases. In the next attempt, we usually overcome that mark. So in that case, this green line around 23,900 is something that we have the next major hurdle. And once we break that mark, then the previous swing high close to around this 24,200 is something that the market might test. So as of now, one level, if you have to keep in mind, is 23,200 on the closing basis. Until we break that mark, there will be a possibility of a rebound towards upper band, that is around 23,900 or maybe higher, right? So देखिए निफ्टी का जो पहले जो मूव होता था और अभी के एक डिफरेंस आ गया है। और खासतौर से ये नॉर्मल होता है कि जब मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, तो जो रिकवरी आती है उनमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है। तो आपको हर लेवल पे रुकना पड़ता है, हर लेवल पे मार्केट को स्ट्रगल करना पड़ता है। तो वही सिचुएशन अभी भी है कि आपने एक बाउंस कर रहे हैं, 1000 पॉइंट का एक रिबाउंड आया है, 22,700 से लेकर 23,800 तक का आपका एक रिबाउंड आ गया। अब पिछले 3 दिनों में आप थोड़ा सा बैकफुट पे आए हैं। लॉन्ग टर्म एवरेजेस को अभी आप कुछ खास रिस्पेक्ट कर नहीं रहे हैं। मींस ये जो रेड लाइन है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये 200 दिन की एवरेज है। तो इसके ऊपर नीचे दोनों ही साइड पे हो रहा है। तो बेसिकली आप अभी उसको उतना ज्यादा वैल्यू नहीं कर रहे हैं। प्राइस एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो रिसेंट अभी लो बनाया था 23,200 का, इसको होल्ड करेंगे हम, तो पॉसिबिलिटी बनेगी कि हम 23,900 वाला जो टारगेट के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं इस ग्रीन लाइन के लिए, राइट? अगर 23,200 ब्रेक हो जाता है, तो दोबारा से बायस आपका साइड वेज टू नेगेटिव हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, उस केस में दोबारा से फिर आपका जो लोज बने थे करीब 22,800 वाले, वो दोबारा से खुल जाएंगे, राइट? तो 23,200 को ध्यान में रखना है फॉर द नेक्स्ट वीक। अभी तक बायस पॉजिटिव है, तो हमको उस हिसाब से अलाइन करनी है अपनी पोजीशन को व्हेन इट कम्स टू द निफ्टी इंडेक्स। नाउ द की सेक्टर बैंकिंग। Why key sector? Because in the recent 1,000 point rebound in the Nifty index,
The entire rate sensitive pack, including banking, financials, auto, realty, they played a critical role. And earlier also we were seeing outperformance of the banking pack, means though the Nifty shed nearly over 12% or more from their record highs, banking was down nearly 9% from its recent highs. So in a way, it is comparatively better. Still, it's maintaining its outperformance. But after this recent outperformance, here also we are seeing challenges emerging around this moving averages ribbon. So around this 50,650, if one level you have to keep in mind for the next week, that should be 50650 spot. Until we break that mark, there'll be a possibility that we may see profit taking in banking index and 49,600. This yellow line is something that it can retest, and if it breaks, then 48,900. So here 49,600 is critical support, immediate support for banking index. But comparatively, yes, it's better, it is stronger. But for any fresh move, we need to break this barrier above 50,650. Once we break that mark, then probably we can inch toward this 51,700, 500 zone. देखिए, बैंकिंग ने आउट परफॉर्मेंस किया है और ज्यादातर जितने भी रेट सेंसिटिव पैक हैं इन सभी ने आउट परफॉर्म किया है इस रीसेंट रिकवरी में मार्केट के, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो एनबीएफसीज हो, चाहे वो ऑटो हो, चाहे रियल्टी काउंटर्स हो, इन सभी ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है. बट अब ये तो होता नहीं है कि एक ही टाइप के स्टॉक और सेक्टर चल के आपका मार्केट को तेज कर दें. ऑब्वियसली सबका पार्टिसिपेशन रोटेशनल बेसिस पे चाहिए होता है अपने को, जो अभी तक नहीं आ रहा था. और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये रेट सेंसिटिव जो पैक है वो थोड़ा सा थम रहे हैं, खासतौर से बैंकिंग, क्योंकि 50,650 ये जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक बैंकिंग में तेजी, नेक्स्ट लेग की तेजी की उम्मीद नहीं है. और यहाँ पे अगर डिप आता है तो 49,600 का जोन वो इम्पोर्टेंट होगा, राइट. तो इन अ वे 1,000 पॉइंट का बैंड आपके लिए बन गया है अब इसमें बैंकिंग इंडेक्स में. जिस साइड पे ब्रेक होगा उस साइड पे मूव आएगा, राइट. इंडिकेशन क्या है? इंडिकेशन अभी भी पॉजिटिव है. कंपैरेटिवली ये निफ्टी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अभी रिकवरी आई है, स्ट्रेंथ आई है, तो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. और अगर अदरवाइज भी देखेंगे तो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक, एक्सिस, इन सभी ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी है ड्यूरिंग द वीक. तो पॉसिबिलिटी यही है कि थोड़ा कंसोलिडेशन होके एक बार दोबारा से अटेम्प्ट करें ये 50,650 को ब्रेक करने की. बट जब तक नहीं होता है तब तक अज्यूम ना करके हमको केवल जो मार्केट कर रहा है उस पर फोकस करना है, उसके अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशंस को मेंटेन करना है. व्हेन इट कम्स टू द पीएसयू बास्केट, वहां पे चैलेंजेस हैं अभी भी, क्योंकि पोस्ट एसबीआई नंबर जिस तरीके से डिक्लाइन आया है, नॉट ऑल स्टॉक्स आर डाउन एंड आउट, बट यस कंपैरेटिवली उस तरीके का पार्टिसिपेशन नहीं है पीएसयूज में जितना कि प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में दिख रहा है. तो अकॉर्डिंगली वन शुड फोकस ट्रेड्स व्हेन इट कम्स टू द बैंकिंग पैक, right? Now let's talk about the next space, stocks, where we should focus for the next week. So usually you should focus on stocks where earnings are behind us, means जहाँ पे earnings आ चुकी हैं, और कोई सरप्राइजेस के चांसेस कम हो जाते हैं कि पता लगा नेगेटिव सरप्राइज कोई आया है स्टॉक में और अर्निंग्स की वजह से और एक करेक्शन आ गया. So first, Bharti Airtel recently posted numbers. Today, the reaction was upbeat. We have discussed about this stock last month also. So we still feel, sorry, one should be focusing only on the stock or theme wherein we are seeing consistency in the trend. And Bharti Airtel has been
consistently holding above its you know medium term moving average for almost 2 months now, and the recent price action indicates a possibility of trend resumption shown. So probably we can see a new high in the coming sessions. So this is one stock wherein we see strength. So even if, let's say, something goes wrong in the market, we know that 1600 is the area basically where we have strong base for Bharti Airtel, right? So accordingly one can manage their stop losses. देखिए, ये पहला नाम, और ये नाम क्यों है भारतीय एयरटेल का लिस्ट में, जैसे कि मैंने बताया कि जब मार्केट में आपको ट्रेंड पता नहीं है कि ट्रेंड कैसा होने वाला है, मींस ये रिकवरी है, ये रिकवरी एक्सटेंड होगी नहीं होगी, कितनी होगी, तो इन सब चीजों में बीच में केवल जहां पे की स्ट्रेंथ आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल है कि जहां पे हाँ ये स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है, मार्केट के मूव के साथ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रहा, तो इस तरीके के काउंटर्स जैसे कि हमने अभी रिसेंट वेबिनार्स में लास्ट किए थे, बजाज फाइनेंस हो गया, एसआरएफ हो गया, कोटक हो गया, तो ये सारे नाम उसी तरीके के ही हैं। तो यही एक चीज है कि जो कि मार्केट में यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि बाय साइड पे ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने का रूम नहीं है, क्योंकि टोन बाय एंड लार्ज नेगेटिव साइड पे ही है। कि आप देख रहे हैं खासतौर से मिड कैप और स्मॉल कैप में तो वही है कि थोड़ा भी मार्केट में अगर डिक्लाइन आता है तो वहां प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हियर स्टॉक्स जहाँ पे कि क्लियर कट स्ट्रेंथ है उन्हीं को फोकस करें, और खासतौर से अगर उनकी अर्निंग्स आ गए तो वो और भी अच्छी बात है, कोई नेगेटिव सरप्राइजेस नहीं आएंगे। तो भारतीय एयरटेल पहला नाम जहाँ पे कि काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है, 1600 के पास एक बेस बना रखा है बहुत स्ट्रांगली। आज के सेशन में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि क्लोज हुआ है ये स्ट्रांगली, वॉल्यूम्स काफी अच्छे थे, सारी इंडिकेशन है कि पॉसिबली आपको आने वाले टाइम में तेजी बरकरार नजर आए। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, चंबल फर्टिलाइजर। सो लाइक व्हाट वी शेयर्ड अबाउट strength. So it's a clear-cut example of strength. Means despite the ongoing volatility in the market, the stock was hovering in a range 460, 440 on the downside, 540, 550 on the upside. So this 100-point range is something that stock was hovering in for almost 2-3 months now. And finally, in today's session, we saw that the stock managed to decisively close above the band. So two important things. First, that it was not participating in the market decline. Second, post earnings, we are seeing a outrightly positive tone. So there's a possibility that this move is likely to extend further. देखिए, जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेंथ को बाय करने वाली बात, तो दूसरा नाम चंबल फर्टिलाइजर का क्यों, क्योंकि जैसा आप देख पा रहे हैं अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ही स्टॉक ये कंसोलिडेट कर रहा था एक रेंज में, और अर्निंग्स आई जब भी मौका मिला स्टॉक में तेजी का मूव आया, वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांग हुए, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस पे बंद हुआ। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि यहाँ से स्ट्रेंथ बढ़ सकती है आने वाले दिनों में, तो ये चंबल फर्टिलाइजर आपके फोकस में होना चाहिए। लास्टली ऑन द लिस्ट, LTTS from the IT pack. See, IT as a pack, we are seeing very varied signals. Means you'll see a couple of names, inching higher or maintaining decent gains. At the same time, the other names from the pack, they might be trading at the day's low. So it is normal during earnings. So that's the reason why I always recommend, especially during the earnings season, not to focus more on the sector, instead focus on the stock, because it's very difficult to gauge or at least identify the top performers or top underperformers within the sector, so that as and when the opportunity arises, you have a list of stocks to trade in. So on the positive side, as you can see on the graph itself, it's been almost like a several year of consolidation. Means see this,
after making this high in 2022, it's almost 3 years now that stock has been hovering in a range. Means it tried to make a new high here, and maybe it successfully did that also, but it couldn't hold. Again a dip, then again attempt of recovery, but it could not hold and inch lower. But this time the low was higher. Again at an attempt, but this time it made a newer low. So it means in during this period, those who were holding longs, they were completely exhausted, means that the stock is not going anywhere, and they've exited their position. The stock slipped to its 100 EMA, and then eventually, recovered and inched towards its previous high zone again. So after such a volatile swings, it seems like that the stock is set for the next leg of the directional move. Means all the damage when it comes to the price action structure we've already seen, and there's a possibility the way it ended this week that we'll see clear cut multi-year breakout in the stock in the coming weeks. So this could be the candidate for accumulation. तो देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं कि अगेन यहाँ पे भी वही दिख रहा है आपको, कॉमन चीज जो कि मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्यों? क्योंकि अपने रिकॉर्ड हाइस के पास है, बीच में काफी हद तक टाइम स्पेंड कर दिया इसने रेंज में, और वो कब किया? जबकि अपने रिकॉर्ड हाइस को रीटेस्ट करके एक डिप देना, डिप में जो पहला लो था उससे हायर लो बन रहे हैं। यहाँ पे भी लो बनाया, फिर उसके बाद इससे हायर लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया, इसको ब्रेक किया था, बट प्रीवियस वाले को इसने होल्ड किया। तो इसका इतना सिग्निफिकेंस यहाँ पे नहीं है। मेन यहाँ पे क्योंकि करेक्शन काफी शार्प आया था, उसको ये होल्ड कर पाया, तब भी ये लो डिफेंड हो गया 100 EMA का, और अब दोबारा से अपनी तेजी दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये 3-4 साल का जो ये रेंज रहा है इसमें टीटीएस में, ये एंड होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं लॉन्ग ट्रेड्स के लिए। सो नेट नेट Nifty banking index tone is positive, but we need to defend this 23,200, 49,600 mark in the coming week to maintain this positive tone. Otherwise, the bias would turn again sideways to negative. Upside 23,900 and 50,650 is something these indices can test. And once we break 50,650 in banking, then probably 51,700 is also something that it might attempt. Stock specific, all three names on the positive side wherein one can look to accumulate. First is Bharti Airtel, Chambal Fertilizer and LTTS. तो दोनों इंडाइसेस में आपका व्यू अभी पॉजिटिव साइड पे है। वो कब चेंज होगा? जब 23,200 को या फिर 49,600 को, दोनों को निफ्टी और बैंकिंग इंडेक्स इन लेवल्स के नीचे निकल जाएंगे, तब प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मार्केट में आपको दोबारा से प्रेशर देखने को मिले या फिर मार्केट रेंज बाउंड हो जाए। तो ये रिकवरी का जो ये फेज है ये खत्म हो जाएगा। ऊपर पे 23,900 या 51,700 के लिए इन लेवल्स को होल्ड होना जरूरी है निफ्टी और बैंकिंग इंडेक्स में। स्टॉक स्पेसिफिक हमने बात की भारतीय एयरटेल की, चंबल फर्टिलाइजर की और एलटीटीएस की, जहां पे आपको फोकस करना चाहिए लॉन्ग ट्रेड्स के लिए। So this is all from the presentation part. Now let's do a quick feedback poll and then we can start with the Q&A. So please fill in your feedback and then you can start posting your question using that Q&A button. तो कोई भी आपका सवाल है, Q&A बटन आपकी स्क्रीन पर है, वो आप पूछ सकते हैं उसको यूज करते हुए।
Please quickly fill this feedback so that we can start with the Q&A. And if you are done with that, you can start posting the questions. Q&A बटन के स्क्रीन पे जो है आपको उसको यूज करते हुए. Okay, so we are almost done now. Okay, so let's start now with Q&A. Okay, so first, Ajay Gupta, Mr. Ajay Gupta has given the feedback. So thank you, sir, for the informative session. Thank you, Mr. Gupta, for attending. And your advice on SRF and Bharti stood out very good. Thank you. This week, trend fell more than 10%, but still, big house are giving higher targets. So is it good to follow their advice or they are trying to distribute? Please advise. So again, Mr. Gupta, like I always say that the stock specific queries is something that we avoid considering that it's going to be an unending session. Uh, but like what I mentioned during the presentation, that if a stock post earning is showing strength, then you should not feel worried about whatever the uh, uh, other participants are sharing or saying. But at the same time, if the price action of the particular underline is showing something and indicating something, then we should respect that. So be it Trent or any other name, if post earning we are seeing dent in the prices, and if our view is short term, so obviously we should respect the price action and act accordingly. If you have made investments, let's say for long term, then your focus area should not be the price action. Yes, it's always a critical factor, but the first thing to focus is on the earnings, the quality of earnings, and the guidance for the coming quarters, and how reliably that you can hold to this rational. So as of now, it is very normal during earnings that we see volatile swings across the board. So be it very clear at the beginning itself whether I'm trading or investing. If you are investing, you should not get carried away with any of these factors. Just focus on earnings. If it's short-term trading, then your level should be in place. So hope it helps. Okay, next we have Ayush on. Okay, again, the stock specific queries, but I'll answer in the other way around, that how we are seeing the finance basket, NBFC basket. So after this recent surge, in fact, one thing which I feel and I in fact see during this performance, that most of these quality names from the NBFC basket, they're still showing strength. So stock like Chola Finance, M&M Finance, uh, from the gold lending space, Manapuram, Muthoot, and stock like, then we have next rankers, L&T Finance, wherein we are seeing recovery and all. So yes, this entire pack is still okay, means we can see further legs of recovery or a rebound uh, in weeks to come. But like what I mentioned earlier, that if there is any earnings scheduled, and since we are seeing volatile swings during earning and post earnings also, be strict with your stop losses if you are trading. If you have made a long term investment point of time horizon, then definitely you can stay put. Right. So this is about L&T Finance. Okay, next is which sector to avoid. So avoid
I won't say avoid, but yes, avoid FMCG for a time being now. Means the way we are seeing decline across the FMCG pack, despite the recent recovery, that clearly shows that there could be further pain, at least in the near future. So eventually, we may see, you know, a breather or a pause. But since we are focusing on outperformance, so instead of accumulating them on dips, the focus should be more on the quality names. So FMCG is one pack wherein we are seeing relatively lower strength and potentially further decline also. So avoid FMCG. Okay, so last question on which sectors to focus. So again, like I would say that instead of focusing on any particular sector, maintains a stock specific approach in rate sensitive pack means banking, financials, auto, realty. Uh, this should be a preference. Then selectively from metal and IT space as well. So barring FMCG, all these sectors are offering opportunity to buy quality stocks. It's just that you have to identify them, timely if the view is short term, and prefer hedge position until we see some stability in the market. All right. So yeah, any questions other than this? Okay, so we are almost done now. So today is 7th. So next week we'll connect again. So thank you everyone for joining in, and we'll connect again on 14th. Thank you.